Good morning, class 6. Myself Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the first video lecture of the chapter The Living Organism and Habitats, means living organisms, characteristic and habitat. So, before directly jumping into the chapter, first I have to explain you the heading living organism. So, how we differentiate a living organism from non-living organism means what are the characteristics that differentiate a living organism from non-living organism. Living organism need food, living organism breathe, living organism reproduce, living organism excrete, living organism move from one place to another. So these are the characteristic. मीन्स अगर हम बोल रहे हैं हम लिविंग हैं और ये बोर्ड नॉन लिविंग है तो इसमें हम कैसे अंतर करेंगे। तो पहला गुण, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन चाहिए, हमको भोजन चाहिए, इसको भोजन नहीं चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, ये सांस नहीं लेता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हम बड़े होते हैं, इसका साइज फिक्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट, अगर बाहर गर्मी लगने लगा तो मेरे बॉडी से पसीना चलने लगेगा, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, किसी प्रकार का एक रिस्पॉन्स देगा, एक प्रकार का चेंज होगा मेरे बॉडी में, एक प्रकार से हम अपने आप को ठंडा करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो चेंजेस, जो रिस्पॉन्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रो वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मींस एक्सक्रीशन होता है, इसमें एक्सक्रीशन नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं या बेबी को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, बट ये नहीं करता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये मूव नहीं करता। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, मींस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, growth, these are the characteristic that differentiate a living organism from non-living. So these all things we will see in detail when we enter into the chapter. Next, so you got that living organisms characteristic, means the characteristic means the gun, characteristic feature, वो गुण that differentiate a living organism from non-living things. Next is habitat. What do you mean by habitat? Habitat means the place where the living organism is found, or the place where organism live is called its habitat. For example, water. Water is the habitat for fish. Tiger, forest is the habitat for the tiger. Birds, means trees are the, means tree is the habitat for the birds. Camel is found in the desert region, so desert is the habitat of the camel. So different region where living organism is found, means the area where organism is found or live is called its habitat. Okay, so these all things we have to see. Habitat is of two types: terrestrial habitat or aquatic habitat. Terrestrial habitat means the organism, means the plant and the animal that live on the land is said to be terrestrial habitat, or living in the terrestrial habitat. Aquatic habitat, organism or the plant that live in water is called aquatic habitat. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी बहुत तरह के हो सकते हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन एरियाज, दीज ऑल आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट भी बहुत तरह के हो सकते हैं, लेक, रिवर, पॉन्ड, सी, ओशियन, दीज ऑल आर द aquatic habitat. So these all things we have to see in this chapter. So if I go by bird with the chapter, in this chapter from the beginning it is said that the Bujo and Paheli went to different region. For example, she went to Rishikesh, she went to Rajasthan, she went to Puri,
And when she went to the Rishikesh, she found different type of plants, where he found oaks, pines, deodar. When she came to Rajasthan, yes, they found cactus, they found camel. So in different region, they found different type of plants and animals. So when they came back, they thought that, is there any place where organism is not found? For that, what she did, she saw into the cupboard and she went outside the house. Everywhere she found some organism is there. So she thought that everywhere organisms are found, but she found that different organisms are found in different places. So they thought that, means this, as the sequence goes, the term comes habitat, means अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं, और उनमें कुछ गुण होता है, सम चेंजेस, some difference is there. Some organisms are adapted to live in desert. For example, cactus, for example, camel, they are adapted to live in the desert region. For example, polar bear, they are adapted to live in the cold region. So different organisms are adapted to live in different region. So what is this adaptation? Means small changes or the special feature of the organism that help them to live in a particular habitat is called adaptation. So all these things we have to see. So first I will explain you what is habitat. So characteristic of living organism means characteristic of living organisms. I am writing here, we will discuss this in detail. Living organism grow, need food, respire, respond to stimuli. What is stimuli? Any change in the surrounding which our body detect and respond. जैसे बाहर बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी लगने लगा, मतलब ये एक स्टिमुलाई है, और हमारा बॉडी से पसीना चलने लगा, ये एक रिस्पॉन्स है. सो a living organism respond to stimuli and they excrete, they reproduce, and they show movement. So these are the characteristic of living organism. They grow, they need food, they respire, they respond to stimuli, they show excretion, they reproduce, and they say movement, means they show movement. These are the changes, means these are the characteristic of living organism. You just remember now, we will see one by one in detail after discussing habitat, adaptation, and some adaptation in the camel, fish, and cactus. These we will discuss, then we will discuss these things according to NCERT. Next is habitats, the place where organism live is called habitat. Types. So types of habitat. First, terrestrial habitat, the plants and animals that live on land are
said to live in terrestrial habitat. Example of terrestrial habitat: forest, grassland, desert, and coastal and mountain regions. Second is aquatic habitat. The plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitat. Example: lake, river, sea, ocean, etc. So these are the terrestrial and aquatic habitat. Next, what is we have to discuss in an habitat? For example, if we are talking about, for example, river, or if we are talking about desert, or we are talking about forest. If I am talking about forest, in forest there will be plant, there will be animals, there will be soil, there will be water, there will be different component, temperature, different sunlight. So these all things are found. If we are talking about desert, so in desert there will be cactus, there will be camel, there will be sand, there will be air, there will be some amount of water. If we are talking about lake, in lake there will be fish, there will be soil at the bottom. In water, air is dissolved, so different component is there. So in an habitat, द कंपोनेंट मीन्स उसके जो पार्ट हैं, जो हैबिटेट के जो पार्ट हैं, उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट. मीन्स द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. जैसे मान लेते हैं अगर हम फॉरेस्ट बोल रहे हैं तो फॉरेस्ट का बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा? प्लांट, एनिमल्स, ये क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट. अगर फॉरेस्ट के हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलना चाहेंगे तो क्या बोल रहे हैं? सॉइल, एयर, वाटर. उस जो एरिया में जैसा वाटर पाया जाता है, जैसा सॉइल पाया जाता है, जिस प्रकार का हवा है, ये सब को हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे. ओके ओके. सो बायोटिक कंपोनेंट, द ऑर्गेनिज्म, both plants and animals living in a habitat is known as biotic component. Means किसी भी हैबिटेट में पाया जाने वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब को एक साथ उस हैबिटेट का बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे. नेक्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट. द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज rocks, soil, air and water in the habitat form abiotic component. Means किसी एक एरिया में पाया जाने वाला rocks, soil, water और air सब मिलके abiotic component बनाएंगे उस habitat का. Means the component of a habitat is divided into two categories on the basis whether there is living or non-living. So living component of a habitat is called biotic component and non-living component of means any habitat is called abiotic component. Done? अच्छा, कुछ गुण होते हैं जिसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह रह सकता है. जैसे
कैमल, कैमल क्या है, बहुत दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। वो क्या है, उसका चमड़ा मोटा होता है। दे आर एडेप्टेड मीन्स उनके बॉडी में इस प्रकार का बदलाव हो गया है कि वो आसानी से डेजर्ट में बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। मतलब कैमल्स आर एडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट रीजन। अगर हम पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर के बॉडी पे एक थिक फर का लेयर होता है जो उसको ठंड से बचाता है। सो पोलर बियर इज ऑल्सो हैव सम गुण, दे ऑल्सो हैव सम फीचर्स that help them to survive in the polar region. So these small changes, that is presence of hair on the body of polar bear or capacity of the camel to live in extreme hot without water for long duration, these changes in the body is called adaptation. means अपने environment के अनुसार वो अपने आप को ढाल लिए हैं। So adaptation क्या है, special feature of the body that help the organism to live in their habitat comfortably is called adaptation. So what is adaptation? The presence of a specific feature, a specific gun, feature means gun, which enables means which make them capable, which enables an organism to live naturally at a place is called adaptation. किसी एक जगह पे ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जो स्मॉल उसके बॉडी में गुण है और जो फीचर है जो उनको वहां रहने में मदद करते हैं, जो उनको जिस गुण के कारण वो उस एरिया में रह पाते हैं, उसको हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। So that's all for the day. Remaining we will see as we proceed. Okay.